Hello students, I hope you all are ready for question of the day. So take out your pen, pencil and notebook, and here is your first question. Convert the following into Roman numerals. And there are five sub questions. I want you all to take your time, complete this all five questions and be ready with your answers. You can pause the video. As soon as you are done with your answers, you can replay it. Yes, students. I hope you all must have completed the question that is converting falling numbers into Roman numerals. Now, keep that notebook aside. At the last, I'm going to show the answers, and you yourself need to give marks for these five questions. Yes, so from this, you all must have understood today's topic. Yes, everyone, it's Roman numerals. How many of you know about Roman numerals? What all things you know about Roman numerals? Are you finding it easy or difficult? Let's check. Now we are going to discuss complete Roman numerals. So don't worry about it. Okay. Yes. So we are going to discuss rules of Roman numerals, which are different. Roman numerals are there. That also we are going to discuss. So yes, everyone. Basically, there are 7 symbols in Roman numerals. That is I, T, X, L, C, D, and M. If you remember this in this sequence, it will be easy for you for uh, using the tricks which I'm going to share in today's video. So IVXLCDM, if you can repeat it again and again and remember this way, it will be helpful for you. So very first trick I'm going to share that what this I stands for. What does this V stands for? What is this? L stands for? Sorry, X first. X stands for. Then L. Then C. Then D. And at last M. So I, V, X, L, C, D, M. Do you know what that I stands for? Most of you know it. Yes. Why? Because it's very easy and we all have used it. Okay. So I stands for 1. B stands for 5. Yes. X stands for 10. L stands for, now from here, little bit confusion must have started. But don't worry. Yes. L stands for 50. C stands for 100. D stands for 500. M stands for 1000. A little bit challenging to remember. Yes. But we need to remember this. I have a trick. Would you like to know the trick? Yes. देखो बहुत सिंपल है. क्या करना है? IV Excel CDM इसे सबसे पहले लर्न करना है in a sequence. After learning it in the sequence, write it down. After writing, follow the 1-5 trick. What is 1-5 trick? I'll tell you. देखो 1-5-1 आपको यहाँ पे फर्स्ट लेटर के लिए 1 लिखना है, दूसरे लेटर के लिए 5. फर्स्ट लेटर नेक्स्ट लेटर के लिए 1, then 5, then 1, then 5, then 1, and as there is no letter after that, so no need to write it further. This is 1-5 trick. This is 1-5 trick. Is it completed? No. अब क्या करना है? पेयर बनाना है.
first 2 की pair, second 2 की pair, third 2 की pair, yes, and last they will not be paired. Now after this क्या करना है? The trick is, अब देखो यहाँ पे फर्स्ट जो पेयर है वहां पे कोई भी जीरो नहीं रहेगा. यस, यहाँ पे हमें नेक्स्ट ट्रिक क्या है? 1 5 के बाद डिस्ट्रीब्यूट जीरोस. Just in case if you cannot remember this, okay, this trick will help you to remember. First pair, no zeros. Second pair, 1 1 0. Third pair, 2 2 zeros. Are you getting? And the remaining one, how many zeros will be there? 3 zeros. So, can you remember this way? Yes, it's just a trick to remember Roman numerals along with its symbols or numbers and their symbols. Now, here I have given the complete list. What about 1000, 2000? Always many students ask about what about higher Roman numerals? Is it till 1000 only? No, the Roman numerals are there further also. Very simple thing I would like to tell here. यहाँ पे देखो, जैसे V is 5 और मुझे 1000 के आगे पहुंचना है, तो what I'll just do, I'll just draw one line over here, one bar over this V. So this bar will give you 3 zeros. So you just have to put 3 zeros over here, and here V, that is 5, will turn to V bar, that is 5000. Same case with X. X stands for 10. So X bar कितना होगा? Yes, इसके ऊपर 3 zeros. So it will be 10,000. See, Roman numerals, yes, from 1000 till 10,000. If you want further, yes, L stands for 50. So if you give bar over here, over it, so L bar. So L bar will give you 3 zeros. So if you just add 3 zeros over it, so it will be 50,000. Same case with C. C stands for 100, and C bar will turn that 100 into, yes, 1 lakh. Similarly, D bar, yes, can you guess what will be the D bar? Yes, 5,000, sorry, 5 lakh. Okay, M bar will be 3 more zeros on 1000. So it will be 10,000. So as you all can see here, yes, the Roman numerals not just till 1000 but till 10 lakh. So you all can take a screenshot of it and you all can remember these Roman numerals, or you can note it down. Clear? So I hope you all must be knowing the Roman numeral now till 10 lakhs. Okay, now let us discuss the rules of Roman numerals. Rules of Roman numerals. Now, which are the rules? Actually, there are 6 to 7 rules, or 7 to 8 rules are there. We need to remember and apply the rules very carefully. Then and then our answer will become correct. Then only we'll be able to convert Roman numeral into Indian, or Indian numbers into the Roman numerals. Now, one by one, let's have a look over the rules. First rule says Roman numerals are read from left to the right. Left to the right, इसका मीनिंग क्या होता है कि जैसे ये नंबर है MCLXX, तो ये एक रोमन न्यूमरल है. अब इसे जब हम पढ़ेंगे तब इस साइड से नहीं पढ़ते हुए जाना है, हमें इस साइड से पढ़ना है. ओके, सो सबसे पहले हम M को कंसिडर करेंगे, फिर C को, फिर L को, फिर X को, एंड एट द लास्ट X. So it is from left to the right. So this is the meaning of first rule. Second rule, if we add or subtract the value of each symbol, find the value of, sorry, we add or subtract the value of each symbol to find the value of the number. अब जैसे यहाँ पे मैंने आपको नंबर दिया था MCLXX, how much it is? हमें पता है? नहीं है.
तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे ईच सिंबल की वैल्यू एक तो ऐड करनी पड़ेगी, नहीं तो सबट्रैक्ट करनी पड़ेगी। अब वो कौन डिसाइड करेगा, दैट विल बी डिसाइडेड बाय द नेक्स्ट फ्यू रूल्स, है ना, रूल नंबर 4, रूल नंबर 5 में आपको एग्जैक्टली पता चलेगा कि व्हेन टू ऐड एंड व्हेन टू सबट्रैक्ट। बेसिकली हमें वन बाय वन जो रोमन न्यूमरल है या सिंबल है उसके वैल्यूज को एक तो ऐड करना होता है, नहीं तो सबट्रैक्ट करना होता है। दिस इज द मीनिंग ऑफ रूल नंबर 2। we add or subtract the value of each symbol to find the value of the number। अब देखो ना, यहाँ पे m means 1000, c means 100, l means 50, x means 10, x means 10, है ना। अब यहाँ पे हम ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे, उसके ऊपर इसकी वैल्यू हमें मिलेगी। ओके, let's talk about next rule, rule number 3। rule number 3 says a symbol can be repeated only 3 times। So here one important thing, you can repeat a symbol, you can repeat a symbol only 3 times, not more than that। How, that we are going to discuss। Rule number 4, if the value of the symbol from left to the right decreases, yes, or remains the same, then we have to add, अब देखो, what is the meaning of it, left to the right value of the symbol decreases or remains the same। यहाँ पे देखो 1000 है, 1000 के बाद 100 डिक्रीज हो रहा है, देखो ना 1000 के बाद 100 आ रहा है तो नंबर छोटा हो रहा है ना, 1000 फिर 100, तो यहाँ पे एडिशन आएगा, डिक्रीज हो रहा है। देन 100 के बाद 50 आ रहा है, डिक्रीज हो रहा है, सो एडिशन। 50 के बाद 10 आ रहा है, डिक्रीज हो रहा है, एडिशन। 10 के बाद 10 आ रहा है, डिक्रीज हो रहा है, नो। इंक्रीज हो रहा है, नो। रिमेन सेम है, यस। देन आल्सो एडिशन। व्हाई, हियर पे अटेंशन, हियर रिमेन्स द सेम, देन यू हैव टू ऐड। So in this way you will be able to get the value of this symbol or value of this number, that is MCL double X, 1000 plus 100, 1100 plus 70, 1170 will be the value of this Roman number। Now let's look at the rule number 5। if the value of the symbol increases, what if it is increases, then we need to subtract, okay। Then rule number 6, VLD can never be subtracted and repeated, Rule number 7, X can be subtracted from L and C only, and C can be subtracted from D and M only। So this is just a brief idea about Roman numerals। Okay, now we are going to discuss it with examples। So ready? Rule number 1, Roman numerals are read from left to the right। Is it clear? हम हमेशा जो कोई भी रोमन न्यूमरल रहेगा उसको हम पहले लेफ्ट से पढ़ना स्टार्ट करेंगे, ओके, एंड देन स्लोली टू द राइट विल मूव। सो लेफ्ट टू द राइट, डिड यू अंडरस्टैंड दिस वन? यस, रूल नंबर 1 वेरी सिंपल, ओके। रूल नंबर 2, we add or subtract the value of each symbol to find the value of the number। अगर हमें वैल्यू ऑफ द नंबर ढूंढना है, यहाँ पे हम रीड कैसे करते हैं? फर्स्ट रूल इज ऑल अबाउट रीडिंग, सेकंड रूल इज ऑल अबाउट वैल्यू ऑफ नंबर, हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द नंबर। यस, दिस इज व्हाट पर्टिकुलर क्वेश्चन है ना, कि कोई भी नंबर दिया जाएगा तो आपको उसकी वैल्यू ढूंढनी है। जैसे MC इज अ रोमन नंबर, so how to find the value of MC? So for that you need to write the value of each symbol। what is the value of M? It is 1000। what is the value of C? It is 100। same case with this CD, what is the value of C? 100। what is the value of D? 500। on that basis, yes, you need to add or subtract, so there are rules for it, separate rules are given, so we'll discuss that, okay। Now rule number 3, a symbol can be repeated only 3 times। yes, एक सिंबल है वो हम मैक्सिमम 3 बार रिपीट कर सकते हैं, ओके। सो लेट्स हैव अ लुक। अगर हम I को 1 कहते हैं तो
या 1 को I कहते हैं तो 2 को क्या कहेंगे? What is 2? 2 can be written as 1 plus 1, no? So 1 को हम I बोलते हैं तो दूसरे 1 को भी I बोलेंगे एंड 1 plus 1 2 होता है. So it is double I. For 3, how can be 3 written as 1 plus 1 plus 1? That is 3 times 1. That is why 3I, triple I. What about 4? 4 cannot be written like this. If we try to write it like this, 4, 1 plus 1 plus 1 plus 1, or yes, 4 times 1s. So how many times I will be there? 4 times I, and that is not allowed. That is against the rule number 3. A symbol can be repeated only 3 times. So हम 4 को yes 4 times I नहीं लिख सकते. This is wrong. This is wrong. So what we need to do for 4? Yes, we need to do some arrangement. तो 4 को कैसे लिखा जाता है? 4 can be written as 5 minus 1. चलो 4 को हम 4 times 1 नहीं लिख सकते. Yes, as it is going against the rule. So what we can do? We can write it 5 minus 1. अब 5 minus 1, 5 का सिंबल होता है V and 1 का सिंबल होता है I, और इन दोनों के बीच में subtraction. So subtraction कैसे लिखा जाता है? Always the smaller number comes before. I symbol will come before V. So IV. So here 4 will be termed as IV. Clear? Not VI. This is wrong. Clear? What is correct? This one. So this is the rule number 3, that a symbol can be repeated only maximum 3 times, not more than that. Next rule, rule number 4. If the value of the symbol from left to the right decreases or remains the same, then we can add. Okay. Now we'll discuss rule number 4 and 5 together. What is rule number 5? If the value of the symbol increases, then we subtract. देखो, अब मैं क्या करता हूँ, इन दोनों रूल्स को मर्ज कर देते हैं, मतलब दोनों रूल्स को इकट्ठा साथ में पढ़ता है. ओके, तब जाके हमें बहुत अच्छे से समझ में आएगा. ओके, सो हियर आई हैव मेड अ शॉर्टकट ट्रिक. देखो, अगर सेम है, वैल्यू ऑफ द सिंबल क्या है, सेम आ रहा है, तो एडिशन करना है. यस, डिक्रीज हो रहा है तो भी एडिशन करना है, एंड इंक्रीज हो रहा है तो क्या करना है, सब्ट्रैक्शन करना है. क्लियर? सो लेट मी write few numbers over here and let us see how we can get the answers. Let's say the numbers are M, M, C, D, double X, I, V. अब देखो, M stands for, अब जैसे पहला रूल कहता है कि हमें जो नंबर्स है फ्रॉम लेफ्ट टू द राइट पढ़ने हैं, तो हम सबसे पहले M को कंसिडर करेंगे या V को? M को. Why? Because M is on left side. And rule number 1 says, yes, read the number Roman numeral from left to the right. First rule clear. Rule number 2. Rule number 2 says, yes, write the value of each symbol. चलो, rule number 2 कहता है कि write the value of each symbol. तो हमने स्टार्टिंग में ही देखा है कि M की वैल्यू 1000, नेक्स्ट M की वैल्यू 1000, नेक्स्ट C is there 100, D is 500, X is 10, X 10, I 1, V 5. Rule number 2, yes. Rule number 3, yes, no symbol repeated. So rule number 3, no need to take in consideration. Rule number 4 and 5 6. अब देखो, यहाँ पे सबसे पहले जब हम रीड करते हैं तो सबसे पहले कौन सा नंबर डिस्कस करेंगे? लेफ्ट मोस्ट 1000. अब इस 1000 के कंपैरिजन में जो नेक्स्ट नंबर है, इन कंपैरिजन टू दिस 1000, व्हाटएवर इज द नेक्स्ट नंबर, सो व्हाट इज द नेक्स्ट नंबर? 1000. अब मुझे बताओ, पहले नंबर से दूसरा नंबर डिक्रीज हुआ, इंक्रीज हुआ या सेम है? इस 1000 के कंपैरिजन में ये वाला जो 1000 है वो इंक्रीज हुआ, डिक्रीज हुआ, सेम है?
इट इज सेम. यस, ये सेम ही रहा है. ओके, सो सेम होता है तो क्या करेंगे? यस, look at the remember point. Rule number 4 says in that case you need to do the addition. So let's add. Now look at this 1000 and the next number. 1000 के कंपैरिजन में जो नेक्स्ट नंबर है वो इंक्रीज है, डिक्रीज है या सेम है? 1000 के बाद अगर 100 आता है तो नंबर छोटा हो रहा है ना, डिक्रीज है. सो इन केस ऑफ डिक्रीज व्हाट वी नीड टू डू? In case of decrease, what we need to do? We need to add. Do the addition here. Yes. Now look at this 100 and then 500. 100 के बाद क्या आ रहा है? 500. इंक्रीज हो गया नंबर, 100 200 बढ़ गया ना. सो इंक्रीज, जब इंक्रीज होता है तो हमें क्या करना होता है? सब्ट्रैक्शन. हमें क्या करना होता है? सब्ट्रैक्शन. सो पुट सब्ट्रैक्शन साइड. Now look at 510. Increase हुआ, decrease हुआ, ये same है? Decrease. So addition. Decrease के लिए addition होता है. Then look at this 10 and next 10. Number is increase, decrease or same? It is same. So addition. Look at the next. 10 के बाद 1 आ रहा है. So it is decrease and decrease means addition. 1 के बाद 5 आ रहा है, नंबर इज इंक्रीज और इंक्रीज के लिए क्या होता है? सब्ट्रैक्शन. लेट्स पुट अ सब्ट्रैक्शन साइन. अब क्या करना होता है? यस, आफ्टर दिस डोंट थिंक अबाउट द बॉडमास. यहाँ पे बॉडमास अप्लाई नहीं करना है. ओके, नाउ सबसे पहले यहाँ पे जो सॉल्व करना है दैट इज सब्ट्रैक्शन. यहाँ पे सबसे पहले जो सब्ट्रैक्शन वाले टर्म्स है उसको सॉल्व कर लेते हैं. दैट इज this one. ओके, सबसे पहले इसे जो सब्ट्रैक्शन है वो सबसे पहले कर लेना है और बाकी सब एज इट इज. सो 1000 प्लस 1000 प्लस 100 minus 500. now 100 minus 500 we do not write minus 400 है ना. यहाँ पे क्या करते हैं? 500 minus 100 करते हैं. तो 500 minus 100 क्या होगा? 400 प्लस this 10. Yes, 10 plus next 10 plus 1 minus 5. 1 minus 5 cannot be done. So 5 minus 1 will do. 5 minus 1 कितना होगा? 4. And in this way, now all the numbers are in addition. So here you can get the total of it. So what is the total of it? Yes, the total of it 2424. I hope you all have understood. Let's take one more example just in case if you're not understood. Yes, we'll take the number as C D L triple X I X. Okay. So rule number one says start with leftmost digit. Rule number 2 says write the value of each symbol. So let's write the value of each symbol. 100, then 500. For L 50, for X 10, for next X 10, for next X 10, then I 1, then X 10. अब यहाँ पे आप बोलोगे कि सर X तो 4 times आ गया है ना, X X X, but in between there is I, so it is not 4 times. Okay, what is been told कि कोई भी सिंबल रिपीटेड कैन बी रिपीटेड ओनली 3 times. तो यहाँ पे देखो x x x 3 times ही रिपीट हुआ है, उसके बाद x नहीं है, उसके बाद ix है. So here even though it is 4 times but not repeated. Yes, one after another. Okay, so you need to remember this point. अब यहाँ पे देखो 1000 550. अब यहाँ पे हमें देखना है वो इंक्रीज डिक्रीज वाला कॉन्सेप्ट. ओके, रूल नंबर 4 and 5. 100 के बाद 500 आ रहा है. स्मॉल 100 एक नंबर है, उसके बाद 500 आया. बढ़ गया नंबर या छोटा हो गया? बढ़ गया है. यस, इंक्रीज. सो सब्ट्रैक्शन. यस, इन कंपेयर टू 500 नेक्स्ट नंबर इज 50. इंक्रीज और डिक्रीज? डिक्रीज. सो वी नीड टू डू एडिशन.
As compared to 50, 10. Increase or decrease? Decrease. So addition. Sorry. Then 10 and 10. Same, not increase, not decrease, but same. So in case if it is same, addition. 10, again 10, same, same means addition. 10, then 1, decrease. For decrease, again addition. And 1 and then 10, yes, increase. So here, subtraction. So first, you, as you know from the previous example, first we need to do the subtraction. So first complete the subtraction. Yes. 500 minus 100, 400 plus. Then 50, then 10, then 10, then 10, and 10 minus 1, 9. And what will be its total? 489. 408. So in this way, you can write a Roman numeral into the, yes, Roman numeral into the Indian or Hindu Arabic. So I hope you have understood rule number 4 and 5. And in this way, you have understood how to convert a Roman numeral into Hindu Arabic. Now, let's look at the rule number 6 and 7. अब देखो यहाँ पे rule number 6 says VLD can never be subtracted and yes, it cannot be repeated. Yes, and it cannot be repeated. अब देखो क्यों हम VLD को subtract नहीं कर सकते? I'll tell you. अगर हम XV लेते हैं तो क्या होगा इसका XV का? V stands for 5 and X stands for 10. ओके अब यहाँ पे अगर हम 10 में से 5, अब जैसे 5 के बाद 10 आ रहा है तो नंबर इंक्रीज हो गया तो सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा एंड 5 माइनस 10 इज व्हाट 5 बट वी ऑलरेडी हैव अ सिंबल फॉर 5 दैट इज v. अगर हम 5 को v लिख सकते हैं तो हम 5 को vx क्यों लिखेंगे? नो नीड टू राइट नो. यस और नो? क्लियर? So this is the reason we do not subtract v from any number. Similarly, L. अगर यहाँ पे हम दूसरा एक नंबर ले लेते हैं, let's say LC. अगर हम LC ले लेते हैं, okay. So L stands for 50, C stands for 100. Okay. छोटे नंबर के बाद बड़ा नंबर आ रहा है या नंबर इंक्रीज हो गया तो सब्ट्रैक्शन. So 100 minus 50, it is 50. अब मुझे बताओ 50 के लिए already we have a symbol that is L. So why we'll write LC? Will not. So this is the reason we do not subtract V, L and D. इसके लिए एक बहुत अच्छी ट्रिक है. देखो V means 5, L means 50 and D means 500. तो हमेशा याद रखो ये जो 5 वाले नंबर्स होते हैं 5, 50 and 500 इसे हम subtract नहीं करते हैं. इवन हम इसे रिपीट भी नहीं करते हैं. अब रिपीट कैसे नहीं करते? देखो v v लेट्स से आई हैव रिटन, यहाँ पे मैंने लिखा है v है v v v प्लस v नो v मींस 5 v मींस 5. दोनों नंबर्स क्या है? सेम है तो इसकी एडिशन करनी पड़ेगी एंड 5 plus 5 will become 10. नाउ फॉर 10 we already have a symbol that is x. अगर हमारे पास 10 के लिए ऑलरेडी सिंबल है तो हम v v नहीं करेंगे. yes or no need to go for that. This is the reason VV cannot be repeated. Same case with LL. LL 50 plus 50, 50 plus 50, 100 हो जाएगा. And we already have a symbol for 100. So we'll not write LL instead of C. Right? This is the reason we cannot repeat or we should not repeat V, L and D. D के लिए भी वही होता है 500 plus 500. That will become 1000. So rule number 6 is clear. I hope. Okay. Now, let's talk about rule number D. Rule number D says X can be subtracted from L and C only. Okay. C can be subtracted from D and M only. Okay. X can be subtracted from L and C only. C can be subtracted from D and M only. Okay. So this type of question will be there most of the time in MCQ. So don't worry. I have a trick for it.
आपको क्या करना है, सिर्फ आईवी एक्सेल सीरियम याद रखना है। ओके, आईवी एक्सेल सीरियम याद रखा। नाउ मेक अ पेयर ऑफ 3 3। ओके, so let's say first pair is of first three, then second pair is of these three. Okay. Or chalo forget about the pairs. Okay, I'll tell you the colors. यहाँ पे yes, like this you will color first three. Okay, I, V and X. तो यहाँ पे ये कलर्स क्या बता रहे हैं कि ये जो I है, I can be subtracted from V and X only. I can be subtracted from V and X only. Now, look at the next one. Can we subtract or can we subtract B? नहीं, अभी हमने रूल नंबर 6 देखा। Yes, B को हम subtract कर ही नहीं सकते। So let's not talk about B. Let's talk about X. Okay, X can be subtracted from next two. That is L and C only. L and C only. Okay, L and C only. Similarly, yes, look at this L. Can we subtract L? No. अभी हमने देखा था कि by rule number 6, L cannot be subtracted. Okay. Then let's talk about C. C can be subtracted from next two only. That is D and M only. So this is the trick by which you can remember, yes, which symbol can be subtracted from which symbol. है ना? तो आप इसे याद रखने के लिए थोड़ा सा ऐसा कलर भी कर सकते हैं। This way it will help you to remember. Sorry, that C is not visible. Okay, so first three ka group, then second three ka group, and then last three. Okay, if you are not able to get it like this, yes, let me try to explain it differently. Yes, what you will do, you'll make a yes, you'll make a circle like this. First three, then next three, then next three, like this. So यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि ये जो बीच में आ रहे हैं, यस, इन्हीं के बारे में बात हो रही है। ओके, एज यू कैन सी इन द रूल नंबर 7, एक्स के बारे में बात हो रही है, सी के बारे में बात हो रही है। यहाँ पे देखो, एक्स के बारे में बात हो रही है, सी के बारे में बात हो रही है। तो एक्स हम कौन से इसमें से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं? तो ये सर्कल बताएगा एक्स कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम एल एंड सी ओनली, एंड सी कहाँ से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं? डी एंड एम ओनली। तो और एक वैसे ही होता है आई के लिए भी, आई के लिए भी वो रूल है, बट यहाँ पे मेंशन नहीं है। आई कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम बी एंड एक्स ओनली। सो everyone, this was the last rule. I hope you have understood. Okay, let's come back to our question. Okay, but before that, I have one more trick to solve the question of the day. Okay, this was the question of the day. 2 3 5 3 2 4 3 4 5 3 4 5 6 6 3 2. Okay, now if we go with the rules, okay, here how we can write its answer? Yes, 2353 can be written as, just a minute. Okay, अब ये जो नंबर है हम इसे कैसे लिख पाएंगे? अब हमें पता है 2353 मीन्स व्हाट? 2000 प्लस 300 प्लस 50 प्लस 3। अब देखो 2000 कैसे बन सकता है? 2000 कैन बी रिटन एज 1000 प्लस 1000। Yes, as we have symbol
for 1000. 300 can be written as 100 plus 100 plus 100. Then 50 can be written as, yes, as already there is symbol for 50, so 50 will be written as it is. And 3 can be written as 1 plus 1 plus 1. Okay, so let's write this Roman numeral. For 1000, it is M. For another 1000, it is again M. For 100, it is C. For 100, it is C. For 100, it is C. For 50, it is L. For I means for triple one, triple I. So this will be Roman numeral for your first number. Yes. So this is little inconvenient, or we can say long process. But if you wanted to write it with the rules, yes, this is the only way to write. Yes, बट फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है. जैसे अगर मैं क्वेश्चन नंबर 4 की बात करता हूँ, तो 3456, तो कब हम 3000 लिखेंगे, कब हम 400 लिखेंगे, कब हम 50 लिखेंगे, कब हम 6 लिखेंगे, फिर कब हम सोचेंगे 3000 मतलब 1000 प्लस 1000 प्लस 1000. यस, वी डोंट हैव दिस मच टाइम टू राइट. ओके, 400 मीन्स, अब यहाँ पे देखो 400 क्या होता है, 500 माइनस 100, क्योंकि 100 को 4 टाइम्स नहीं लिखेंगे. यस, फिर 50, we know L symbol is having 6, 5 plus 1. So this much time we don't have, but I have a trick for this. Okay, what is the trick? Once if you will learn one table, okay, अगर आप एक टेबल याद करते हो तो आपको ये बहुत ही इजी हो जाएगा. What is the table? Here is the table. Roman numerals. This table you need to learn. अब देखो हमें पता है I means 1, और 1 के लिए I, 2 के लिए क्या होगा, डबल I, 3 ट्रिपल I, 4 IV. 4 कैसे आता है, 5 minus 1, and 5 minus 1 is, yes, IV. For 5 already symbol is there, 5, 6, 5 plus 1, that is VI. 7 कैसे लिखेंगे, 5 plus 1 plus 1, 7. 8 कैसे लिखेंगे, 5 plus 1 plus 1 plus 1. How we can write 9? 5 plus 1 plus 1 plus 1 4 times 1 नहीं लिख सकते, तो हमें कैसे लिखना पड़ेगा, 10 minus 1, that is IX, या X minus I, that is IX. And 10X. Okay, so simply you need to write this and you need to learn it. Same with the multiple of 10. 10 के मल्टीपल क्या होते हैं, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. जैसे यहाँ पे 1 के मल्टीपल है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. देन 10 के मल्टीपल 10, x, 20. 20 क्या होता है, 10 plus 10, डबल x. 30, 3 times 10, yes, addition of 3 times, that is triple x. 40, 50 minus 10, xl. 50, already there is symbol. 60 L, 60 क्या होगा, 50 plus 10 LX. 60 done. 70, 50 plus 20, yeah, 50 plus 10 plus 10, so L double X. Similarly 80 L triple X. 90, 100 minus 10, that is XC, 100C. As we have written the symbols for multiple of 1 and multiple of 10, similarly we'll write the multiple of 100 also. But what are the multiple of 100? 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, and 1000. So 100, already there is symbol C. 200, 100 plus 100. 300, 100 plus 100 plus 100. 400, 500 minus 100, that is CD और DC. DC का हमें क्या करना पड़ेगा, yes, subtraction लेना पड़ेगा. Then 500 already symbol. 600, 100, 500 plus 100, 700, 500, 500 plus 100 plus 100, 800, 500 plus 300, 900, 1000 minus 100, that is CF and M. So like this, if you remember these symbols
for multiple of 10, 100 and 1000. Then you can go with the very simple trick. What is this? What is the trick? Expanded form. Whatever is the, yes, whatever is your number, right, is expanded form only, and you will get to see its answer very quickly. Let's take one example. Okay, what was the number in the question? In this question, the number was, let's say, first number was 2300 plus 50 plus 3. So what is the Roman numeral for 2000? Look at in the chart. Just a minute, I'll get this chart for you. Okay. Yes. Look at here. What is the symbol for 2000? Let's say 2000 plus 300 plus 50 plus 3. Okay. Look at the Roman numeral for 2000. Okay. आप यहाँ पे देखते हो 2000 को तो mm. So how will you write mm here below this 2000 with the capital letters mm. 300. Look at the hundreds multiple. 300. What is the symbol? CCC. For 50, it is L, and for 3, it is triple L. Yes, this is the answer of first. What is the answer of second? How will you write second one? What is the number? It is 24. 24 can be written as expanded form. 20 plus 4. So what is the Roman numeral for 20? It is XX, and for 4 it is IP. Similarly, for 345, it is 300 plus 40 plus 5. So how will you write 300? 300, it is triple C. 40, look at in the chart, XL, and for 5, it is P. Next, fourth one. How will you write fourth one? 3, 4, 5, 6. 3, 4, 5, 6. First, write down the expanded form. 3000 plus 400 plus 50 plus 6. So here you just have to write the symbol for 3000. It is triple M. 400, it is CD. 50, it is L, and 6, it is D. And the last, fifth one, yes, the number is 6303. 6303. So the expanded form of it is 6000 plus 300 plus 0 plus 3. Yes, 6000, it is V bar M. For 300, it is triple C. For 0, no symbol, and for 3, triple I. So here you just have to put V bar. Okay, so like this way you can find the answers with the trick. So here are the answers of your question of the day. Kindly cross check your answers and give mark to yourself and try to solve the same once again. Yes, everyone. So we have discussed how to convert a Roman numeral into Hindu Arabic numbers, yani Indian numbers, and Indian numbers to the Roman numerals. Okay. Now we'll be discussing last point of this topic,
That is addition and subtraction of Roman numerals. Many times, yes, addition and subtraction of Roman numerals. So how to solve this? Very simple. देखो यहाँ पे एक सिंपल नंबर दिया है. Yes, XL plus X V double I. तो करना क्या है? Basically convert this Roman numeral into Indian numbers. XL कितना होता है? 40. Yes. XV यानी कि 10 plus 5 plus 2 17. Yes, like this you will convert, and at the last you will add it or subtract it. So 40 plus 17, yes, 57, and 57 can be written as 50 plus 7, 50 L and 7 V, V double I. So in this way, you can write the sum of Roman numerals as well as difference of Roman numerals. So no need to do anything extra over here. You just simply convert the Roman numeral into Indian numbers. Okay, then add or subtract, and whatever will be the sum or difference means answer of that again you need to convert it to the Roman. So everywhere, yes, it is convert. Yes, converting either Indian number into Roman numerals or Roman numeral into Indian. I hope you have understood this topic, and hopefully you all can solve all the questions related to the Roman numerals. Yes, everyone. So let's stop here for the day, and let's meet in the next video.